अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिमांड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो वो जो हमारा लास्ट लेक्चर था फॉर ओनली फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिमांड थ्योरी एंड रिलेटेड विद द सप्लाई थ्योरी। तो हियर वी प्रॉपर्ली स्टार्ट विद दिस। First of all, we define the what is demand. So as you know, economists take the demand term in as different from the other. It has a specific definition in economics. The definition is the amount of something, the amount of some good or services consumers are willing and able to purchase at each price. In coming section, we will discuss the two main pillars from this definition. Number one is a willing. The willing is based on the needs and wants, and number two is able to purchase. We can say that it is a purchasing power of a consumer at each price. Each price that means the prevailing price of the specific goods and the services in the market. We will discuss in the following section what that term mean what that term mean willing is, and what the mean able to purchase, and third one what does the price definition in economics. So we can move based on this definition. There are two main pillars. Number one, demand is fundamentally based on needs and wants. Willingness comes from the needs and wants of the consumer. If you have no need or want for something, you don't buy it. While a consumer may be able to differentiate between a need and the want, from an economic perspectives, they are the same thing. Needs and wants सेम डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. In general, the consumer may differentiate between them, but in economics, there is no difference between the need and a want. Willingness, that means as we discussed this point, the willing that means the willing comes from the needs and wants. If a consumer has need or want to fulfill his need and want, he want a specific commodity to fulfill this need. If there is a no need or want, there is a no willingness to buy any product. Again, the second pillar is ability to pay. When the consumer showed his willingness to buy a product, he goes to the market, but the price is out of his reach, so then it cannot be a part of the demand. So it is a necessary conditions the able to purchase. That means able to purchase, that is a ability to pay. If you cannot pay for it, you have no effective demand. So we already discussed in our last lecture. Again, we have a simple example, and by this definition, a person who does not have a driver's license has no effective demand for a car. That is a simple example. If we based our driver's license, driving license are based for the demand of a demand for a car. When a person has a driving license, he need a car and he has the ability to pay. All these three conditions collectively make a demand for a car. So what is the price? Price is the amount of the money that a buyer pays for a unit of the specific good or service is known as a price. What does it mean? For example, you go to a market to buy mangoes.
the price of the mangoes, for example, is 200 per kg. At that point, 200 rupee is a specific price for a specific good. That means 200 is a specific price for a specific good. For example, is mango. The unit to buy that is a 1 kg. So that is a price. That means we have to pay to buy a single unit of that product or service. So that is known as our price definition. Again, the last term is we should know that in last lecture we in detail discuss what is a demand, what is the difference between the demand and quantity demanded. The quantity demanded, the total amount of units that consumers would purchase at that price, is called the quantity demanded. For example, we here said that the price of mango per kg is rupee 200. If the consumers in a specific market demand 1000 kg mangoes at rupee 200 per kg, the total units that the consumers are willing to pay to purchase the mangoes is called the quantity demanded. That is the total number of units. Here the total number of units is 1000 kg. In a specific market, in that specific market, the 1000 1000 kg mangoes known as a quantity demanded of that market. So again, there is economists determine the relationship between the price and the quantity. That is the base of the law of demand. As we know that if the change in the price brings a change in the quantity demanded, we can say that there is a relationship between the price and the quantity demanded. The price of, as we discussed in our last lecture, if price of any commodity increase, the demand for that commodity tends to decrease. This is known as the inverse relationship. As we see here, a rise, the relationship between the price and the quantity demanded, a rise in the price of good or service almost always decrease the quantity demanded of that good or services. In opposite, or in other words, conversely, a fall in the price will increase the quantity demanded when the price of, for example, here we can see that a rise in the price, a word is used, a rise in price, say this, a rise, and we see this a decrease. You can see here rise and decrease. In other words, here we see that a fall in price will increase the, again we can see that increase the quantity demanded. We can see that here is a rise or decrease. Here the price increase, the quantity demanded, sorry, here a price fall, the quantity demanded increase. So this is two sides of the definition. Here you can see that in shortly, here we can say that there is an inverse relationship between the price of a good or services and quantity demanded of that good and services. So this is also known as the law of demand. But again we can see that there is a only relationship between the two commodity, between the two variable. Number one is a price and number two is a quantity demanded. Here is an example. When the price of a gallon of the gasoline increase, for example, people look for the ways to
ways to reduce their consumption by combining several events. For example, here we can see that when the price of gasoline, that is of the petrol prices increases, the consumer, people here is the consumer look for look for वो सर्च करेंगे, वो अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे, क्या करने के लिए कि वो अपनी पेट्रोल की कंजम्पशंस को किस तरह रिड्यूस करें। अब वो किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, वो बहुत से तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं बाय सेवरल इवेंट्स। अब इवेंट्स का मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, ठीक है। मैं जैसे क्लास के अंदर एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि कुछ वर्ड्स टर्मिनोलॉजी बीच में यूज़ होती है बुक के अंदर, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा उनको, आप लोगों को 3 तरीके बताए थे कि आप डिक्शनरी यूज़ करें या आप गूगल करें स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के लिए, साथ इकोनॉमिक्स का वर्ड साथ यूज़ करें। और तीसरा मैंने आपको कहा था कि आप एआई यूज़ कर सकते हैं पीडीएफ या वर्ड के अंदर जाकर। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं जो है एक्रोबेट रीडर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो है ये आस्क एआई असिस्टेंट है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें डिफाइन द अबव टर्म, तो मेरे पास ये इसकी डेफिनेशन आ गई है। रेफर्स टू द शॉर्ट ट्रिप्स और द टास्क अंडरटेकर टू accomplish a specific purpose. So we can see here this is a definition. So we can see that the people that means that the consumer, अब वो अपनी पेट्रोल की कंजम्पशन को किस तरह रिड्यूस करेंगे, अब वो उसके लिए वो बताना चाह रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वो ये बताना चाह रहा है कि कंजम्पशन बाय कंबाइनिंग दी सेवरल इवेंट्स कंप्यूटिंग बाय द कारपोल और मास ट्रांसिट, यानी कि वो अपनी सिंगल जो कन्वेंस के ऊपर आ जा रहे थे। फॉर एग्जांपल अपनी कार यूज़ करते थे कहीं आने जाने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है बाइक के ऊपर यूनिवर्सिटी आता है या कार के ऊपर आता है, तो वो फिर यूनिवर्सिटी की बस को यूज़ करेगा, मास ट्रांसिट यानी कि अदर सोर्सेज को यूज़ करेगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट सलोदरा से आता है तो वो स्पीटो जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की उसको यूज़ करेगा। और टेकिंग वीकेंड और वेकेशन ट्रिप क्लोजर टू होम, अगर वो वीकेंड के ऊपर कहीं आउटिंग के लिए फैमिली के साथ जाना चाहता है तो वो ट्रिप को अपने घर के करीब तरीन एरियाज़ के लिए प्लान करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आप मुल्तान को चूज़ कर सकते हैं, तो क्लोजर टू योर होम, कि ताकि आपकी पेट्रोल की कंजम्पशन रिड्यूस हो सके। सो बेस्ड ऑन दिस background, the economists call this relationship between the price and quantity is inverse relationship. This is also known as the law of demand. Again, we also know that there is only two variable here, is one is a price and the second is a quantity demanded. There are other variables can directly or indirectly impact the relationship between the price and the quantity. So as we already discussed, the economist assumes the other things as a constant when they explain the relationship between the price and the quantity demanded. So that is the most important why they use this. Again, what are the factors that affect this relationship, we will discuss in the next section, inshallah. Here is a schedule. We can see here that the price, gasoline price, if is $1, the quantity demanded for that gasoline is 800 million of gallon. 800 million of gallon. So we see this such that if the price increases 20 cent from $1 to 1.2 cent, the price of that gasoline will decrease by 100 million gallon. Again we see that the price of the per gallon also increased 0.2 cent, 20 cents, from 1.2 to 1.4 dollar. The demand for that gasoline decreased from 700 to 600 million of gallon. Again we see that the price again increased 1.2 to 1.6 dollar. Again we see that the demand proportionately decline, but we can see that
600 to 550. Here we can see that 800 to 700, that means the 100 unit declines. यानी कि 800 से 700 हुए हैं तो 100 यूनिट डिक्लाइन हुए हैं, 700 से 600 हुए हैं तो 100 यूनिट डिक्लाइन हुए हैं, यानी कि मिलियन ऑफ द गैलन्स जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 1.4 से 1.6 के ऊपर हम आए हैं तो 600 से 550 मिलियन ऑफ गैलन जो है पेट्रोल की जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्लाइन कर गई है। तो अगेन वी सी डैट यहाँ इससे पीछे जितना था जो चेंज आ रही थी प्राइस के साथ वो 100 मिलियन गैलन्स की आ रही थी, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर $50 की आ रही है। तो अगेन हम यहाँ पे भी देखते हैं अगेन $50, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 6 से ओनली $40 की चेंज आ रही है इस पॉइंट के ऊपर 500 से 460। तो वी कैन सी डैट के जो रिस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांडेड की विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गैसोलीन is not proportionately same at all the change in the price. So the graph here we can see that the graph is not in a straight line. Here we can see that the graph will be graphical behavior is this at this. If the price will be the same, so the graph will be in a straight line, and I draw the straight line, can explain you. Sorry, that is a line. So we can see if the proportionality is the same, the line will be as that is in a straight line. But here we can see that the line is bent here. So we can see that in following section how this impact, why this happen in different commodity. Again, why demand curve is different for different commodities, that is an important point. Why the demand curve that is a graphical representation, we can see that is a one shape, that is a second shape, that is a third shape of the curve. We can see that the steep curve people keep buying even if the price rises. That means कि कुछ commodity की prices जितनी भी बढ़ जाएं तो जो कंज्यूमर है उन्होंने इसको बाय करना है। तो क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि सच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं, दे आर द बेसिक्स ऑफ द लाइफ। फॉर एग्जांपल हाउसिंग है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है और फूड आइटम्स हैं। तो ये आप कंज्यूमर्स जो है इसको करेगा। तो जो स्टीप कर्व होगी आप देखते हैं कि वो किस तरह ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो अगेन फ्लैट कर्व पीपल आर प्राइस सेंसिटिव एंड विल स्टॉप बाइंग इफ द प्राइसेस राइसेस। कुछ कमोडिटी की प्राइसेस अगर थोड़ी सी बढ़ भी जाएं तो कंज्यूमर उनकी प्राइस को पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि प्राइस कम होगी, हम इसे तब खरीद देंगे। इसको मैंने कहा था कि ये लग्जरी भी हो सकती हैं, कंफर्ट आइटम भी हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कंसिस्टेंट चेंज इन द डिमांड विद द प्राइस, जिस तरह मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन बनती है क्योंकि जितनी चेंज प्राइस में आ रही है उतनी ही चेंज क्वांटिटी डिमांड में आए तो वो इस तरह का कर्व बनेगा। अगर प्रोपोर्शनेटली चेंज ना हो, फॉर एग्जांपल डिमांड चेंजेस डिफरेंटली एट डिफरेंट प्राइस लेवल, जिस तरह ऊपर एग्जांपल के अंदर देखा कि हमने कहा था कि एक पॉइंट के ऊपर जहाँ 50 यूनिट कम हो रहे हैं गैसोलीन के, किसी जगह 40 हो रहे हैं, किसी जगह 100 हो रहे हैं, तो डिमांड चेंज इज डिफरेंट एंड डिफरेंट प्राइस लेवल। तो कर्व जो है कुछ इस तरह का बनेगा, कर्व लाइन बनेगी, कहीं ज़्यादा बन सकती है, कहीं कम बन सकती है। तो ऊपर हमने इसको डिस्कस किया था। अगेन वी कैन सी हियर दैट द वन पॉइंट इज मिसिंग। You can see that the graph that's mean कि that is our left side, that is our right side, this is our left side and this is our right side. We can see that the curve demand curve, D stands for demand curve, is decline, uh, has declining shape. That means the demand curve is from left to right downward. We see that the demand curve is from left to right downward. So this is a property of the demand curve. So you can see that
why this. तो डेट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर इट। आप ऊपर जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस की हैं वो इस एक इकोनॉमिक्स इस पॉइंट को वो की जा सकती हैं, इसको समझा जा सकता है। तो आप दैट इज़ योर असाइनमेंट। यू कैन सी दैट व्हाट डज इट द मीन आफ्टर टेकिंग योर लेक्चर। व्हाट डू यू मीन? इज द डिमांड द सेम एज द क्वांटिटी डिमांडेड? That means it's a your simple assignment. I can ask you to do I that is your assignment. uh, that is your assignment, and differentiate between demand and quantity demanded quantity demanded. That is your simple assignment. You can read this and discuss on your LMS section. So again, LMS section, in my next lecture I will give it you assignment to write up to 100 word on your LMS. Thank you.